Number one. Number two, the web server having serviced the user's requests may not reach the users within an acceptable time because of congestion in the network, increased delay or unexpected delay, by degrading the expected quality of service by the user, right? So that is why instead of one web server servicing a large number of users, multiple web servers are kept, but there will be only one web server, main one server, web server is known as the origin server, and there will be other replica servers which will be maintaining a replica of some of the content, not the entire web server content, but some of the contents from the origin web server, so that the access delay from the user becomes small compared to access delay with the origin server, right? So just to make the things fast. So the second point, why, as we just said, that it improves the performance. First thing, performance in the sense that the delay is user access delay to the contents of web server is reduced, right? Because the origin server may be located after hundreds of hops, whereas the replicated server or replica server may be available less than that hop, right? Nearer to the user. That's how it reduces the access delay to the server, replica server, and so we say that improved performance. And second, the scalability. Scalability is because as the number of users increase, we can add more number of servers to the existing infrastructure, thus by distributing the requests among large number of servers, and so again improving the response time. Correct? Students, is it correct? Did you understand? Students, any questions? Okay. So we will go little technical about what we discussed just now, in the sense that what we exactly mean by the access time or the performance. In the previous slide, we discussed about the term improve the performance. See the second point in under Y. We discussed a point that is improve the performance. So what this improve the performance means, okay, we'll go a little detail about it. So let us see what is slow access time problem. You see on the right side there is CNN.com web server, and it is connected to the CNN network, okay, which allows the users from outside the network to access the CNN server. So on the bottom side, you see that there's a client access network. So on the other side, server access network, client access network. These clients access the server through public internet, and you see the internet is a combination of several routers, and all the requests that flow from client access network to the server access network has to go through several routers in the public internet. So what happens? We know that the internet is subjected to hop-to-hop delay, congestion increases delay, right? And queue length increases the delay, and so on and so forth. So the traffic flowing or the packets flowing over the public internet are exposed to various types of delays.
and these delays when added, that forms the total access delay, which should be less than an acceptable delay, right? Less than an acceptable delay. So if the delay is more than acceptable delay, what do we call it as? We call it as deterioration of quality of service. Nobody wants increased delay, excess delay, right? So this delay is somehow to be minimized. So this is your slow access time problem, and slow access is due to the inherent delay in the internet, public internet. Any questions here? Oh, okay. Are you able to see it now? Okay. So the slow access time problem, you see on the top right, we have CNN.com set of web servers, and which are accessible through CNN network by the client access network, which is shown at the bottom of the slide. So these client access network accesses the CNN.com server web server through a couple of routers which are a part of public internet, right? And the various delays can be, you see the red letters, that's low bandwidth. That access network has low bandwidth link, can have low bandwidth link, and among the routers there can be congestion, there can be longer queues at the routers, and there may be the servers are overloaded in the sense that the arrival rate lambda is greater than the service rate, right? So the delay caused by each of these, means low bandwidth link due to congestion, due to longer queue length, due to the longer queue length at the server. So delay caused by these individual components constitute the total access delay, right? Constitute the total access delay. And if the total access delay is greater than the acceptable delay, then we say there's a deterioration in quality of service, right? And this is what collectively known as slow access time problem. What is it, students? Slow access time problem. It is the problem arising out of low bandwidth link, congested link, overloaded servers, etc. Right? What about you, other students? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So these are fundamentals of internet technology. What are the different delays involved in the internet? If you can understand this, then you can understand what is a slow access time problem. Any question? No. Then comes your server farm. Server farm, you see in the diagram, it shows that there are n number of servers. Okay, multiple servers. That's why the name server farm. Multiple servers and requests arriving from internet on the other side from users. Okay, users that are split among the servers. Suppose there are 100 requests coming from at a rate is incoming rate of requests is 100 per unit time. Then this 100 requests are divided among n available services to cater the requests. For example, your IRCTC has about 7 to 8 servers.
So the huge number of requests arriving from its users do not populate only one server. They get split or they get distributed among all the servers. So that the advantage of it are two primarily. One is the slow access time problem can be mitigated. Second thing is that all the servers will be load balanced, right? That is the what is the load here? Load is nothing but the number of requests serviced by the server, by a server. So in this diagram, each server receives a request equal to R over N, where R is the total number of requests arriving. Clear? So through server farming, we can manage this low access time problem to some extent. Why it is some extent? Because we don't have control over public internet infrastructure, right? That's why we say to some extent. So you must have studied in computer organization a concept called caching. Computer organization or computer architecture. Yes. What is a caching? Caching is nothing but maintaining a local copy of the information, right? That's caching. And why do we do caching? Caching provides local access. Local access. If and only if the requested content is available in the cache. If the requested content is available in the cache, we say it is a cache hit. There is a cache hit. If not available, then we call it as cache miss. In case of cache miss, it goes to the next level in the memory for accessing, looking for the content. If it is available, it accesses from there. If it is not available, it goes to another level or to the main memory. You remember that in computers, we see that L1 cache, L2 cache, L3 cache. Are you aware of this? Yes, sir. So what is the purpose of, yes, what is the purpose of these multiple levels of caches? The purpose of multiple levels of caches is that as we move close to the processor, the memory cost increases. Why? Because the memory that is closer to the processor will have higher switching capacity, or higher read-write capacity. Once you say higher read-write capacity, then the cost becomes more. So if you have a memory with very high read-write capability equal to the speed of the processor, then what will be the cost? The cost will be very high. So just to maintain a trade-off between the cost of the overall system and speed mismatch, right? The memory close to the cache memory close to the processor is usually very small but with a very high efficiency. And as you move away from processor, the levels of caches become gradually slow and larger in size, right? As you move away from processor, the memories will become gradually larger in size and reduced speed of read write और मेमोरी एक्सेस. तो इसका मतलब क्या है कि मेमोरी का सबसे क्लोज जो कैशे है उसका जो रीड राइट स्पीड होगा और मेमोरी एक्सेस स्पीड होगा बहुत कम होगा. समझ पाए? रीड राइट स्पीड बहुत ज्यादा होगा या एक्सेस स्पीड बहुत फास्ट होगा. और जैसे आप प्रोसेसर से दूर जाते हो टुवर्ड्स मेन मेमोरी, आपका मेमोरी का साइज बढ़ेगा और एक्सेस लेटेंसी बढ़ेगा क्योंकि रीड राइट स्पीड कम हो जाएगा. ठीक है, ये क्यों करते हैं हम? बिकॉज
we don't want the processor to wait. समझ पा रहे हो बच्चों? प्रोसेसर का जो वेटिंग टाइम है उसको कम करने के लिए प्रोसेसर क्यों वेट करता है? बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ द प्रोसेसर एंड स्पीड ऑफ मेमोरी एक्सेस, है कि नहीं? ये स्पीड मिसमैच के चलते प्रोसेसर वेट करता है. तो if we want to increase the efficiency of the processor, we should see for a mechanism that does not make the processor wait. मतलब कि जब भी उसको इंफॉर्मेशन डेटा चाहिए तुरंत वहां पे अवेलेबल होना चाहिए. That's how we can reduce. So basically the access latency को कम करने के लिए हम कैशिंग मेंटेन करते हैं, कैश मेंटेन करते हैं, कैशिंग मैकेनिज्म फॉलो करते हैं. ठीक. अब इस डायग्राम में देखो, ये फंडामेंटल्स गया. जस्ट आई ट्राई टू पुल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ कैशिंग व्हिच यू स्टडीड इन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर. तो अभी हम इस डायग्राम को देखते हैं. क्लाइंट नेटवर्क विदाउट अ वेब कैशे. तो वेब में भी जो कैशे मेंटेन होता है दैट इज टू reduce the dependency on the remote server and access the information locally. ठीक है. तो ये डायग्राम क्या कहता है कि देखो टॉप राइट साइड में 3 सर्वर्स हैं और बॉटम में देखो कई सारे यूजर्स हैं और ये सारे यूजर्स आपस से 100 Mbps लैन से कनेक्टेड है. ठीक है. और फिर ये जो नेटवर्क 100 Mbps लैन है ये एक स्विच के थ्रू से, ठीक है, एक्सेस स्विच के थ्रू से इंटरनेट से कनेक्टेड है. ठीक है. क्लियर स्टूडेंट्स? सो ये जो 100 Mbps लैन है इसका जो ट्रैफिक इंटेंसिटी क्या होगा अगर हर एक ऑब्जेक्ट का साइज अगर 100 किलोबिट्स है. If every object has 100 kilobit of size that each user is generating from the 100 Mbps LAN, समझ पा रहे? And if they generate 15 requests per second, then what will be the traffic intensity? It will be number of requests per second multiplied by the size of each object divided by the overall bandwidth. So that gives 0.015. 0.015 is the traffic intensity emerging from the users connected to 100 Mbps LAN. और ये जो ट्रैफिक कहां जाता है उसके ऊपर देखो एक स्विच है, उस स्विच से होते हुए नेटवर्क पे जाता है. ठीक है. और स्विच किससे कनेक्टेड है? 1.5 Mbps एक्सेस लिंक से कनेक्टेड है. तो ये जो ट्रैफिक इंटेंसिटी जो कि डेल्टा लैन इज इक्वल टू 0.015 है, दिस एंटायर ट्रैफिक गोज इनटू 1.5 Mbps एक्सेस लिंक. ठीक है. तो इसका ट्रैफिक इंटेंसिटी क्या हो गया विद रिस्पेक्ट टू 1.5 Mbps एक्सेस लिंक? ट्रैफिक इंटेंसिटी क्या हो गया? अगेन द सेम फार्मूला, 15 रिक्वेस्ट्स. समझ पा रहे हो नहीं? 15 रिक्वेस्ट्स मल्टीप्लाइड बाय ईच ऑब्जेक्ट का 100 KB, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय द बैंडविड्थ जो कि अभी 1.5 Mbps है. पहले क्या था? 100 Mbps था, अभी 1.5 Mbps है. तो इसके चलते क्या हो गया? एक्सेस डिले. इट बिकम्स, और सॉरी, ट्रैफिक इंटेंसिटी क्या हो गया? 1 हो गया. ट्रैफिक इंटेंसिटी 1 हो गया मतलब कि दिस लीड्स टू कंजेशन. 100% हो गया. ट्रैफिक इंटेंसिटी 100% हो गया. अब ये ट्रैफिक इंटेंसिटी, ये जो ट्रैफिक कहां जाएगा? इंटरनेट से होते हुए जाएगा. अगर हम एज्यूम करते हैं कि इंटरनेट डिले इज इक्वल टू 2 सेकंड्स, देन द टोटल डिले विल बी द इंटरनेट डिले प्लस द एक्सेस डिले. अगर इंटरनेट डिले हमारा 2 सेकंड है और एक्सेस डिले ह्यूज है क्योंकि ट्रैफिक इंटेंसिटी 100% हो गया, तो एक्सेस डिले विल बी टू हाई. So you can imagine what will be the total delay. Total delay will also be too high. Total delay will be too high. So without a web cache, the total delay will be very high. Any questions, students, in this diagram?
No, sir. So in web cache, what happens? We replicate certain objects locally. देखो वही 100 Mbps जो LAN है, उसी LAN पे हमने कैश सर्वर डिप्लॉय किया and that cache server maintains certain objects. ठीक है? So अब क्या हुआ कि ये जितने सारे क्लाइंट्स है जो 100 Mbps को कनेक्टेड हैं, ये पहले क्या करेंगे कि लोकल कैश को पहले रिक्वेस्ट करेंगे. ठीक है? अगर उनका रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट अगर लोकल कैश में अवेलेबल है तो इमीडिएटली दे विल गेट रेस्पॉन्स एंड दे कैन अवॉइड एक्सेसिंग द एक्सेस लिंक एंड द पब्लिक इंटरनेट. है कि नहीं? इसके चलते डिले क्या हुआ? लो. डिले कम हो जाएगा, राइट? एंड ये जब कैश हिट होगा तभी जाकर डिले कम होगा. माने कि जो ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट किए थे वो ऑब्जेक्ट अगर कैश में अवेलेबल है तब इसको हम कहेंगे कैश हिट हुआ और लोकली एक्सेस मिल जाएगा एंड डिले कम हो जाएगा. अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, लोकली अवेलेबल नहीं है, देन ओनली योर रिक्वेस्ट goes to the remote web server. Clear? Yes, sir. So caching mechanism helps in reducing the time access problem, delay time access problem, right? Let us see how it reduced. You see the same diagram हम रिपीट कर रहे हैं. 100 Mbps सबसे नीचे देखो 100 Mbps LAN है जहां पे एक कैशे लगा हुआ है, लोकली एक कैश सर्वर लगा हुआ है, राइट? और उसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स ऑलरेडी स्टोर्ड है. एज्यूम कर रहे हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स स्टोर्ड है. ऑब्जेक्ट्स वो है जो कि पास्ट में रिक्वेस्ट किए हुए हैं या यूजर्स यूजुअली रिक्वेस्ट फॉर दोज ऑब्जेक्ट्स वेरी फ्रीक्वेंटली. ठीक? सो it has some objects. Now on the top side you see the servers, the farm servers, and they are connected to the internet and internet delay as usual 2 seconds we take. Now ये नीचे का जो नेटवर्क है और ऊपर का जो नेटवर्क है, ये दो किसके थ्रू से कनेक्टेड है? 1.5 Mbps एक्सेस लिंक के थ्रू से कनेक्टेड है. ठीक है? अब देखो ये जो इंस्टीट्यूशनल कैशे जहां लिखा हुआ है वहां पे हिट रेट 0.4 दिया हुआ है. देख पा रहे हो? What does hit rate 0.4 indicate? Which means कि out of 100 requests sent 40 ऑब्जेक्ट्स जो है लोकली अवेलेबल है और 60 अवेलेबल नहीं है. तो मिस रेट क्या हो गया? 0.6. हिट रेट हो गया 0.4. ठीक है? Yes, sir. तो देखो इससे पहले जो हम स्लाइड देखे थे, ट्रैफिक इंटेंसिटी एट द एक्सेस लिंक वाज 1, है कि नहीं? याद आ रहा है? Yes, sir. ट्रैफिक इंटेंसिटी एट द एक्सेस लिंक वाज 1. बट देखो ये 40% लोकली सर्विस होने के चलते अभी ट्रैफिक इंटेंसिटी क्या हो गया? 0.6. Yes, sir. हो गया 0.6. तो टोटल डिले क्या हुआ? कम हो गया, 1.2 सेकेंड हो गया. पहले कितना था? इट वाज वेरी ह्यूज. सो 2 प्लस ये था ना, ये देखो टोटल डिले क्या था? इंटरनेट डिले 2 प्लस एक्सेस डिले. एक्सेस डिले तुम्हारा ह्यूज था. ह्यूज क्यों था? बिकॉज ट्रैफिक इंटेंसिटी एट द एक्सेस लिंक वाज 100% यूटिलाइज था. लेकिन अभी देखो डिले कितना आ गया? 1.2 seconds आ गया. The reason is that 40% of the traffic got serviced locally from the institutional cache and only 60% traffic is directed towards the web servers. हो गया? So the primary understanding here is that
maintaining a web cache indeed helped in reducing total delay. ठीक है? Any questions? Shall we move ahead? Yes, sir. Okay. Now, content distribution network of caches. You see the figure on the other top side, on the top, it is web servers. एक मिनट, हाँ कुरैशी जी, हाँ हाँ, अच्छा 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 अच्छा, तो क्या आज कर रहे हो कि बाद में करोगे? हाँ ठीक ठीक है, आप ध्यान रखो क्योंकि हमारा बोल के करीब, हाँ ठीक है ठीक है ठीक, ठीक ठीक ठीक, okay. So on the top we have web servers and नीचे देखो child 1 child 2 है, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम वेब सर्वर को रेप्लिकेट कर रहे हैं, मतलब कि वी आर रेप्लिकेटिंग certain objects, set of objects, a certain functionality onto the children, ठीक है? सो ये पेरेंट चाइल्ड चिल्ड्रन टाइप का रिलेशन है और यहाँ पे प्रोएक्टिव रेप्लिकेशन करते हैं. सो व्हाट इज प्रोएक्टिव रेप्लिकेशन? दैट बिफोर, एक तो हो गया कैश मिस होने के बाद, कैश जब मिस होता है तो रिक्वेस्ट जाता है, ठीक है? तो एक बार अगर रिक्वेस्ट जाता है तो हमें ये मालूम पड़ता है, सर्वर को ये मालूम पड़ता है कि इस रीजन से बार बार इस ऑब्जेक्ट या इस सेट ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए रिक्वेस्ट आ रहा है. सो उस रीजन में जो चाइल्ड होगा वहां पे हम रेप्लिकेट कर देंगे, ठीक है? रेप्लिकेट करने से क्या होगा कि अभी जो रिक्वेस्ट, सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट जो आएगा वो वहीं लोकली सर्विस हो जाएगा. इट विल नॉट मूव टू द रिमोट वेब सर्वर. दैट्स हाउ जो एक्सेस डिले है वो कम हो जाएगा, ठीक है? स्टूडेंट समझ पा रहे हो? सर इसमें रेप्लिकेशन में क्या हम पूरा जो भी रिक्वेस्ट आएगी सर उसको पूरा रेप्लिकेट करेंगे? रिक्वेस्ट को रेप्लिकेट नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट्स को रेप्लिकेट करेंगे. जो मेन वेब सर्वर होगा, ओरिजिन सर्वर होगा, उसका फंक्शनलिटी को रेप्लिकेट करेंगे. जैसे मान लो कि 10 ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि फ्रीक्वेंटली रिक्वेस्ट हो रहे हैं, तो उन 10 ऑब्जेक्ट को मैं रेप्लिकेट करूंगा. ओके सर. रेप्लिकेट मतलब कि आई विल मेंटेन ए कॉपी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. सर इसमें तो फिर कॉस्ट इंक्रीज होगी ना अगर हम उसके ऑब्जेक्ट्स काफी सारे बनाएंगे? यस, कॉस्ट इंक्रीज होगा, बट यूजर का जो एक्सेस टाइम होगा वो कम हो जाएगा, काफी कम हो जाएगा. ओके ओके सर. Right? Because replication is a technique used to reduce the access latency. ओके. ठीक है? Right. यस सर. So तो हमने एक अप्रोच पढ़ा लेटेंसी रिड्यूस करने के लिए. एक अप्रोच हो गया सर्वर फॉर्म्स और दूसरा हो गया कैशिंग, है कि नहीं? सर्वर फॉर्म क्या करता है कि जितने रिक्वेस्ट आता है उसको हम डिवाइड करके n नंबर ऑफ सर्वर्स में डिवाइड करके हर एक सर्वर को r by n अमाउंट ऑफ रिक्वेस्ट डाइवर्ट कर देते, असाइन कर देते हैं, ठीक है? ये हो गया सर्वर फॉर्म्स. इसके चलते क्या होगा कि द नंबर ऑफ रिक्वेस्ट सर्व्ड बाय ईच सर्वर गेट्स रिड्यूस्ड, thus by reducing the access latency. ये हो गया सर्वर फार्म के अप्रोच हो गया. दूसरा अप्रोच क्या पढ़ा हमने, क्या डिस्कस किया? कैशिंग. स्टोरिंग द ऑब्जेक्ट्स लोकली
अगेन रिड्यूसेस एक्सेस लेटेंसी। तो हमने दो अप्रोच पढ़ा एक्सेस लेटेंसी को कम करने के लिए, एक हो गया सर्वर फार्म, दूसरा हो गया कैशिंग प्रॉक्सी। ठीक, सो सर्वर फार्म्स डू नथिंग अबाउट प्रॉब्लम्स ड्यू टू नेटवर्क कंजेशन, क्योंकि सर्वर फार्म्स नेटवर्क से बाहर है। देखो सर्वर फार्म्स नेटवर्क से बाहर है, देखो यहां पे नेटवर्क से बाहर है सर्वर फार्म, ये देखो ये इंटरनेट से बाहर है, नेटवर्क से बाहर है सर्वर फार्म। ठीक है, तो सर्वर फार्म अप्रोच जो है वो इंटरनेट रिलेटेड जितने सारे डिले है, इंटरनेट के चलते जो डिले है उसको कुछ नहीं कर सकता। क्लियर? यस सर। So server farms do nothing about problems due to network congestion or to improve latency issues due to network. नेटवर्क के चलते कोई भी प्रॉब्लम होगा तो सर्वर फार्म अप्रोच उसको सॉल्व नहीं कर सकता, राइट? On the other side, caching proxies serve only their clients, not all users on the internet. आप देखो कैशिंग में क्या हुआ यहाँ पे, देखो कैशिंग में इस जो 100 Mbps पे जो हमने लोकल कैशे लगाया वो केवल उसी सेट ऑफ यूजर्स को ही सर्व कर रहा है कि नहीं? बट जो ये लैन के बाहर है, जो ये लैन की जो यूजर्स इन लैन के बाहर है, तो उनको उनका प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है क्या? यस और नो? नो, दैट्स व्हाई वी से caching proxies serve only their clients, not all users on the internet. लेकिन कंटेंट प्रोवाइडर्स क्या कर सकते हैं कि ये जो प्रॉब्लम को सर्विस कर सकते हैं, ठीक है, बाय सेलेक्टिवली रेप्लिकेटिंग द सर्वर कंटेंट ऑन द नेटवर्क, विद इन द नेटवर्क। ठीक है, तो यहां हम तीसरा पॉइंट ये करें, कंटेंट प्रोवाइडर्स कैन नॉट रिलाई ऑन एग्जिस्टेंस एंड करेक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ करेक्ट प्रॉक्सीज। मतलब कंटेंट प्रोवाइडर्स के भी कोई कंट्रोल नहीं है कि किस जगह पे किस क्लाइंट के पास रखना है या नहीं रखना है। सो वो क्या करेंगे कि केवल नेटवर्क पे ही डालेंगे। ठीक है, तो तीन चीजों का बच्चों यहाँ पे ध्यान रखने का जरूरत है। फर्स्ट थिंग इज दैट सर्वर फार्म इज वन अप्रोच that does not solve the latency issues arising from the network. ठीक है, on the other side caching proxy केवल अपने क्लाइंट्स को ही सर्व करते हैं, दूसरा यूजर्स ऑन द इंटरनेट का प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते हैं। ठीक है, इसीलिए कंटेंट प्रोवाइडर्स ये कैशिंग मैकेनिज्म के माध्यम से यूज एक्सेस लेटेंसी को कम नहीं कर सकते, यही कंक्लूजन है। ठीक है, समझ पा रहे हो? So in a nutshell we can say that CDN, content delivery network or distribution network, is an architecture for efficient delivery of web content to a large number of clients. CDNs are operated by companies which charge content providers for the delivery services. CDNs are mostly transparent to the end user in the sense कि end user को पता नहीं चलता कि कहां से वो कंटेंट एक्सेस कर रहा है। ठीक है, उसको केवल मतलब है कि मैं क्विकली कंटेंट को एक्सेस कर पा रहा हूं या नहीं, बस उतना ही। ठीक, सो कमर्शियल सीडीएन्स है, एकेडमिक सीडीएन्स है। कमर्शियल सीडीएन्स है जैसे अकामाई, पार्टनर एक्सप्रेस, ये सारे नाम है। आपका नेटफ्लिक्स भी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क को यूज करता है, क्योंकि मूवीज जो स्ट्रीमिंग होंगे वो लोकली ऐसे स्ट्रीम होगा तो नेटवर्क कॉस्ट कम होगा और यूजर को इजी एक्सेस मिलेगा, बेहतर व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलेगा। ठीक है, गाना.com वो लोग भी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क को यूज करते हैं। ठीक है, राइट। सिमिलरली एकेडमिक सीडीएन्स है जो कि रिसर्च कंटेंट जो पीयर टू पीयर शेयरिंग के लिए यूज होता है, राइट। एनी क्वेश्चंस? So CDN basic idea is that the original content अगर हम रेप्लिका सर्वर से अगर एक्सेस करते हैं तो कंजेशन इश्यूज
काफी हद तक कम हो जाएगा, राइट? सो दीज रेप्लिका सर्वर्स of content delivery network are also known as edge servers, also known as edge servers, because they are placed at the edge of the network. edge क्या होता है कि क्लाइंट जहां पे भी फर्स्ट एक्सेस रहता है नेटवर्क को, दैट दे कॉल इट एज एज, क्योंकि उस एज पे रेप्लिका सर्वर्स प्लेस होते हैं, इसीलिए हम उसको कभी कभी एज सर्वर भी कहते हैं, राइट? कोई क्वेश्चन? नो सर। सो कंटेंट क्या है? एनी पब्लिकली एक्सेसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस, एप्लेट्स, फ्रेम्स, MP3 वीडियो, MP3 इवन ऑडियो, वीडियो, फ्लैश, वर्चुअल रियलिटी ऑब्जेक्ट्स, एंड देयर कैन बी मेनी थिंग, ठीक है? कंटेंट का मतलब ये है, आप जो नेटफ्लिक्स पे जो वीडियो देखते हो दैट कैन बी ए कंटेंट, गाना.com से जो गाना ये करते हो दैट कैन बी ए कंटेंट, ठीक है? यूट्यूब से जो कंटेंट तुम ये करते हो, कई सारे इमेजेस का हो, एप्लेट्स का हो, फ्रेम्स का हो, वीडियो का हो, ये सब ये भी कंटेंट है, ठीक है? सो कंटेंट प्रोवाइडर इज वन एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी दैट हैज कंटेंट दैट इट विशेस टू मेक अवेलेबल टू यूजर्स। तो गूगल एक कंटेंट प्रोवाइडर हो सकता है, यूट्यूब एक कंटेंट प्रोवाइडर हो सकता है, हो सकता है, सर यस। नेटफ्लिक्स एक कंटेंट प्रोवाइडर हो सकता है, गाना.com एक कंटेंट प्रोवाइडर हो सकता है, यस सर। right, right. Then comes origin server, which is content provider server, where the content is first uploaded, content is first uploaded, and surrogate server वो होता है जहां पे जो कि कंटेंट डिस्ट्रीब्यूटर सर्वर, where the replicated content is kept। तो दो कीवर्ड बच्चों हमको याद रखना है, एक हो गया ओरिजिन सर्वर जो कि मेन सर्वर है जहां पे कंटेंट को पहले अपलोड होता है, और सरोगेट सर्वर वो होता है जहां पे हम लोग रेप्लिका मेंटेन करते हैं, ठीक है? यस सर। और कंटेंट पहले ओरिजिन सर्वर पे अपलोड होता है, फिर सरोगेट सर्वर पे मेंटेन होता है टू रिड्यूस एक्सेस लेटेंसी, ठीक है? सो ये सारे कंपनीज हैं, याहू, MSNBC, फिर CNN हो गया, गूगल हो गया, ये कई सारे हैं, ठीक है? तो देयर आर कंटेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स, देयर आर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वेंडर्स, देयर आर होस्टिंग प्रोवाइडर्स, एटसेट्रा, ठीक है? और क्या मैट्रिक्स हम लोग यूज करते हैं इसका एनालाइज करने के लिए? नेटवर्क प्रॉक्सिमिटी, मतलब कि किस प्रॉक्सिमिटी में सरोगेट क्लाइंट के लिए अवेलेबल, सरोगेट ऑफ ओरिजिन सर्वर, ठीक है? सरोगेट ऑफ ओरिजिन सर्वर इज अवेलेबल टू द क्लाइंट, मतलब कितने हॉप डिस्टेंस पे अवेलेबल है, कितने राउंड ट्रिप टाइम है, ठीक है? कितने इंटरनेट मैपिंग सर्विसेज हो रहा है, ये सब है। दूसरा मेट्रिक है सरोगेट लोड, मतलब वो जो सरोगेट रेप्लिका सर्वर है उस पे क्या लोड है, कितने नंबर ऑफ एक्टिव टीसीपी कनेक्शंस हैं फ्रॉम इट्स यूजर, ठीक है? रिक्वेस्ट अराइवल रेट क्या है, एंड बाकी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम मैट्रिक्स। फिर बैंडविड्थ अवेलेबिलिटी क्या है वो सरोगेट सर्वर के लिए, ठीक है? सो दीज आर द मैट्रिक्स दैट आर यूज्ड टू अंडरस्टैंड द एक्सेस लेटेंसी प्रॉब्लम। यहाँ पे कोई क्वेश्चन है ये मैट्रिक्स पे? कोई भी एक मैट्रिक्स या समझ में नहीं आ रहा तो पूछो, या और कोई मैट्रिक्स तुम्हारे दिमाग में आ रहा है जो पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। कोई है स्टूडेंट्स? नो। ओके,
ठीक है, तो फिर आज यहीं तक रखते हैं। क्लास का तुम्हारा टाइम हो रहा है, अगला क्लास होगा कि अगला क्लास नहीं है? सर है। ठीक है, तो फिर आज यहीं पे रखते हैं और ये स्लाइड्स में शेयर कर देता हूं तुम्हारे साथ, ठीक है? ओके सर। हाँ, तो एक और क्लास बस हम लेंगे, उसके बाद ये सब्जेक्ट बंद कर देंगे, ठीक है? क्योंकि आप लोगों का 27 तारीख को एग्जाम है, फिर उसके बाद 7 तारीख को एग्जाम है ना? 28 को है। हाँ ठीक है, 28 को है, 28 को लास्ट क्विज 4 हो जाएगा और उसके बाद 7 तारीख को आपका एग्जाम है ना, फाइनल एग्जाम? जी Yes, सर। sir. ठीक है, राइट, ओके, राइट। सर फाइनल एग्जाम कैसा होगा? गूगल फॉर्म्स पे ही होगा ना? नहीं, हाँ गूगल फॉर्म के थ्रू, नहीं गूगल फॉर्म के थ्रू से नहीं होगा। ये आप लोगों को, हाँ आप लोगों को वेबकैम ऑन रखना पड़ेगा। मैं क्वेश्चन शेयर करूंगा आपके साथ, आप लोग पेपर में लिख के उसका फोटो खींच के एक सिंगल पीडीएफ फाइल से मुझे भेजना है तुरंत। सर तो थोड़ा ज्यादा टाइम दे दीजिएगा, क्योंकि पीडीएफ में कन्वर्ट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। हाँ, अगर एग्जाम 1 घंटा या 1.5 घंटे का है तो 5 मिनट ज्यादा दिया जाएगा, 5-10 मिनट ज्यादा दिया जाएगा, ठीक है? जी सर। ठीक, ओके सर। राइट।